Welcome students. RN Classes is back with a discussion of another school paper. On 17th of February, St. Kabir Public School, Sector 26, conducted their final examination for Mathematics Class 9th of Session 22-23. It was a 3 hours exam and you can score full 80 marks if you read it correctly. That's it. Interpretation based, wonderfully framed question paper. Let's jump into it. Section A, 20 questions, 1 mark each. Let's jump on to the first one. Two interior angles on the same side of the transversal intersecting two parallel lines are in ratio 2:3. Measure out the larger angle. So there are two parallel lines and there is a transversal. So in angles की ratio दी हुई है, so I can assume these angles as 2x and 3x. So transversal, same side, their sum is 180, means 2x plus 3x is equal to 180, right? Means 5x is equal to 180, so x is equal to 36. Pretty straightforward. I need the larger angle. भाई larger angle इनमें से कौन सा है? 3x ही होगा यार. So 3 into 36 will give you 108 degrees, which is spot. Next, two straight lines AB and CD intersect one another at point O. If angle AOC, COB, BOD in सबका sum is 274, AOD निकालना है, right? मैं two intersecting lines बना देता हूँ. One is AB and another one is, you can say this as CD, right? This is O. Now, they say AOC, this angle, COB, this angle, and BOD, this angle. इन सबका सम 274 दिया हुआ है, मेरे को AOD निकालना है. So what do I know? भाई सारे एंगल्स का सम, it completes the full rotation, means it is 360, means AOC plus COB plus BOD plus AOD, the entire is 360 and मुझे इन सबका सम दे दिया 274. मेरे ख्याल से हम AOD इजीली निकाल सकते हैं, राइट? तो AOD will be equal to 86 degrees. That's it. AOD is equal to 86 degrees. So A part is the right choice. Next one. The base BC of triangle ABC is produced in both the ways. And the measure of exterior angles formed are 94 and 26. Then BAC is equal to. Okay. Done. तो एक ये एंगल, ये मेरी ट्राइंगल बन गई. A, B and C. Extend किया on both the sides, so please take it like this. Extended on both the sides. This angle and this angle. ये दोनों मुझे दे दिए. This angle was given as 94 degrees and this angle was given as 126 degrees. Right? Now, I need to find BAC. I need to find this angle. Exterior angle की property 126 का मैं use कर सकता हूँ if I know this angle. Let me take this angle as angle 1 and इसको angle 2 ले लेता हूँ. I know angle 1 plus angle 2 is equal to 180 because it forms a linear pair, right? So angle 1 is given to be 94, so angle 2 मैं directly लिख सकता हूँ 180 minus 94, that is 6 degrees. This comes out to be 86. Now इस triangle में this angle, you can take this as angle 3. Angle 3 is the exterior angle. Angle 3 is equal to angle A plus angle 1. Exterior angle property, sum of opposite interior angles. So angle 3 is 126. It was given. Angle A, मतलब कि angle BAC. And यहाँ पे equality है, not plus. Plus यहाँ पे आएगा, angle 1 is 86. So मेरे ख्याल से हम BAC को easily mark कर सकते हैं. 126 minus 86. 126 minus 86 is 40 degrees. C part is the right choice to choose from. If the sides of the triangle are produced in order, okay, then sum of 3 exterior angles so formed is, okay, this is my triangle in order, right? इस एंगल का और इस एंगल का सम. भाई
ये चाहे ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे डेकागन हो, any polygon, sum of exterior angles always remain the same. That is 360, which we have already done in the class. Answer is D part. Next, if every side of the triangle is doubled, okay, then the increase in the area of the triangle, okay, increase in the area होगा कितना? Let's see. अब देखो मेरे पास ये ट्राइंगल है, सपोज करो ये छोटी सी बनाई यहाँ पे, इसकी साइड्स हैं ए बी सी. I can write S also, A plus B plus C by 2, right? So area भी मैं लिख सकता हूँ. Let me take this as area 1. ठीक है. So ये क्या आएगा? Under root of S, S minus A, S minus B and S minus C, right? अब मेरे पास ट्राइंगल बनी थोड़ी सी बड़ी. This was 2A, this was 2B, this was 2C. Again I can write S, इसको S1 ले लेते थे, इसको S2 ले लेते हैं. So this comes out to be 2A plus 2B plus 2C by 2. बाद में मेरे को यूज करना पड़ेगा. Let me take 2 as common. A plus B plus C by 2, which is nothing but 1, right? So S2 को मैंने लिख लिया 2 times S1. What about the area? Area कैसे आएगा? S2 लिखना था, I will write directly as 2 times S1, 2 times S1 minus 2 times A2, 2 times S1 minus 2 times B, and 2 times S1 minus 2 times C. मतलब कि हमारी साइड्स डबल हो चुकी है. So A2 is equal to under root of 2 times S1, मैंने 2 कॉमन निकाला, S1 minus A, फिर मैंने 2 कॉमन निकाला, S1 minus B, एंड फिर से 2 कॉमन निकाला, S1 minus C. 2 का पेयर बनाया, यहां पे भी 2 का पेयर बनाया. I got 2 pairs, so A2 की वैल्यू मैंने सीधा रख दी 4. Under root of S1 and S1 minus A, S1 minus B, S1 minus C. S1 लिया था तो यहां पे भी S1s ही होंगे. I'm so sorry about it. So this becomes area 1. Now, I need to find the increase in the area. Increase in the area क्या होगा? I have to find the increase. मतलब कि A2 minus A1. I will find the increase. बाद में परसेंटेज निकालेंगे, पहले इंक्रीज निकाल लें. 4 times A1 minus A1. This comes out to be 3 times A1. Now, this was the increase, but I need to find the increase in percentage. I have to divide it with the original. Original was A1 into 100. So A1 got cancelled and increase in percentage was given as 300%. Quite straightforward. 1. Answer is part. Right? Mode. भाई मोड क्या होता है? लीस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू? नो 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 नो. मिडिल मोस्ट? नो. Most frequent? Of course, mode is the most frequent value. 7th, on plotting 0, 0, 3, 0, 3, 4 and 0, 4, joining OA, OB, BC, CO, which of the following figure is formed? Let me draw it first. Just by imagining, गलती हो सकती है. Let me take it 0, 0, 3, 0. This was 0, 0. And 3, 4, a little bit up. 3, 4, and here let me extend it. So this would be 0, 4. So this comes out to be O, this comes out to be A, this comes out to be B, and this comes out to be C. So this ये क्या बना? दिख तो यार ये 90 डिग्रीज होंगे, या तो स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगल. ट्रेपीजियम तो हो नहीं सकता, रोम्बस भी नहीं हो सकता. नाउ दिस लेंथ इज हाउ मच? 3. And this length is how much? 4. Oh, rectangle है यार. दोनों sides equal थोड़ा ना, equal हो जाती तो मैं square बोल देता उसको. Next one. The sides of the triangle are 16, 30 and 34. Okay. Its area is. Okay, एक triangle बनाते हैं हम लोग. हमें नहीं पता कैसी triangle है. 16, 30 and 34. देखो, one way is हर एक क्वेश्चन हो जाएगा हेड ऑन से, बट लेट मी रीफ्रेज इट. अगर मैं 16 का स्क्वायर करूं और 30 का स्क्वायर करूं और 34 के स्क्वायर के बराबर आ गया, मींस इट बिकम्स अ राइट एंगल ट्रायंगल. एंड वंस इट बिकम्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, मेरी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, बिकॉज़ आई विल यूज हाफ बेस इनटू हाइट. 16 स्क्वायर इज 256. आई एम फाइंडिंग इट कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है या नहीं बनता है. सो 256 plus 900 will give me 1156, which is nothing but 34 square. बन गया.
It is a Pythagorean triplet, means this is 90 degree. So ये triangle ऐसी नहीं थी. This becomes like this. This is 16. This is 30 and this is 34. So half base into height, half. Base is 30, height is 16. So 2, 8, 8 3s are 24, 0 square. B part is the right choice. Next. If the height and the radius of the cone of volume V is doubled, then the volume of new cone is. Okay. देखो मेरे पास पुराना वॉल्यूम क्या आएगा? पुराना वॉल्यूम आएगा, आई विल टेक इट एज V1. सो मेरे पास 1/3 पाई r स्क्वायर h, राइट? अब मेरे को ये वॉल्यूम V था, ओ सॉरी, इसको V1 नहीं ले सकते, दिस इज V, न्यू को Vn ले लेते हैं. अब डबल कर दिया मैंने रेडियस, मतलब कि वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा? दिस इज 1/3 पाई. अब 2r का स्क्वायर करना पड़ेगा, और h को भी मैंने, रेडियस इज डबल्ड एंड हाइट इज आल्सो डबल्ड, सो वेरी सिंपल, इसको भी मैंने 2h कर दिया. सो यहां से 4 बना, यहां से 2, 8 आ गया यहां पे. तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है v, सो दिस बिकम्स 8v. आंसर इज डी पार्ट. Which of the following algebraic expression is a polynomial in one variable? पहले तो polynomial, x की पावर यहां पे क्या बनेगी? -1. क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है? एब्सोल्युटली नॉट. क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है? एब्सोल्युटली ये पॉलिनोमियल हो सकता है. यहां पे भी तो x रेज पावर -1 नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता. इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, x भी है y भी है, तो ये भी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में चाहिए, एक ही आंसर बनता है. 11th, if the diagonals of the quadrilateral PQRS bisect each other such that angle P is 40, then angle Q is. Okay. Diagonals of the quadrilateral PQRS bisect each other. Okay. मेरे पास एक quadrilateral है, इसके diagonals जो है वो bisect करते हैं. यार diagonals bisect each other, it becomes a parallelogram. Sorry, हम लोग quadrilateral सोचा मैंने, but ये तो parallelogram है यार. बिल्कुल simple, PQRS. Now this is given as 40. मेरे को चाहिए Q, ये चाहिए angle P plus angle Q. Adjacent angles का sum 180 होता है, is 180. Angle P की वैल्यू मुझे 40 दे दी ऑलरेडी, तो angle Q will become 140 degrees. That's it. इतना ही छोटा था क्वेश्चन, and A part is right choice. Next one, question number 12. If the chord of the circle is at a distance of 8 centimeters from the center of the circle and the radius is 17, find the length of the chord. Okay. ये रहा मेरा सर्कल, यहाँ पे कहीं पे chord है. Of course मैं perpendicular ही गिराऊंगा when I'm taking the distance from the center, right? Distance from the center, so perpendicular गिराया. This was the radius, this is 17 and the distance is 8. अच्छा, अगर मैं perpendicular गिराऊं from the center, it would bisect the chord, right? मैं इस chord को ले लेता हूं AB, इसको ले लेता हूं O, so means I can find AC. AC square plus 8 square means that is 64. I'm doing MCQs. I don't need to write each and everything. 17 square is 289. So AC plus square is 225, right? Yes. So AC is 15. Wonderful. AC is 15. So BC would be, this is 15, this is 15. So means AB would be 30. Oh, C part. AB would be, right? Next one. AD is the diameter of the circle. Okay. Diameter दिया हुआ है. AB is a chord. Cool. AB is 34. Now, AD is 34. AB is 30 centimeters. The distance of AB from the center of the circle. बस एक काम करते हैं, डायमीटर तो मैं कहीं पे भी बना सकता हूँ ना. ये रहा मेरा सेंटर, ये रही मेरी कॉर्ड, एंड ये रहा परपेंडिकुलर, राइट? I need to find distance from the center. This is O, this is AB. ये 90 means it would bisect. ये तो मेरे को पता चल गया. Now AB is 30 means this part is 15, this part is 15. It bisects the chord. सीधा ये मन में करते जाओ, यहाँ पे फिगर में बना दो. AD सेंटर से ना, तो मतलब कि डायमीटर सेंटर से पास होगा. This AD is given to be 34 means AO would be 34/2, that is 17. मेरे को ये OD निकालना है, बस that's it. So of course 15 square plus OD का square is equal to 289.
or this was given as 225, right? 15 square. So OD square would be 49, right? So OD would be 49. Minus 40. So yeah, ये तो 64 हुआ. Sorry guys. So OD is 64. So OD square will be 64. So OD would be 8. Answer is D part. Right? मन में करते जाओ. Subtraction करा मन में, check कर लिया कि यार ठीक हुआ या नहीं हुआ. Right? Which of the following is an algebraic expression? Which of the following algebraic expression is a trinomial? Trinomial means 3 terms. Done. कितनी टर्म्स हैं? 2. नहीं चाहिए. ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, ये हो सकता है. 4 टर्म्स नहीं, ये तो 1 टर्म है, ये भी नहीं. सीधा बी पार्ट आंसर यार. इतना छोटा क्वेश्चन. Which of the following is not true for a parallelogram? Okay, parallelogram बना लेते हैं और वो weird सा parallelogram बनाते हैं so that मेरे को properties दिखें. ये लंबा सा parallelogram बना लिया. Opposite sides are equal. ये तो है, true है. उसने not true पूछा है. Opposite angles are equal. Wonderful. ये भी है. Opposite angles are bisected by the diagonal. Opposite angles are bisected by the diagonal. क्या ये एंगल और ये एंगल सेम है? दिख रहे हैं आपको सेम? नो. तो यही हुआ. सी पार्ट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ऑफ कोर्स ये करता है. तो सी पार्ट इज राइट, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा था गाइस, तभी तो मैंने मार्क किया है. इरैशनल नंबर बिटवीन दीज टू, इरैशनल नंबर चाहिए. यहां पे जाके चेंज है, राइट? सो मतलब कि 1.01, 1 और 2 मतलब कि मेरे को 1 लेना पड़ेगा और यहां पे अब मेरे को नंबर चाहिए 11, 143 बोला इसने, ठीक है. 11 और यहां पे मेरे पास आ रहा है 243, तो ये तो हो नहीं सकता. 12, 12 ही हो गया, मेरे को तो 11 चाहिए था, बात भी नहीं हो सकता. 1 1 बिल्कुल ठीक है. इसके बाद उसने बोला 5, इसने बोला था 2, उससे ज्यादा है. सी पार्ट आंसर आ सकता है. एंड उसने क्या बोलता, इरैशनल. ये तो टर्मिनेट ही हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता. आंसर इज, सोच के देखा और डाला. पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर द बेस ऑफ विच इज. पिरामिड, पिरामिड में हमारे पास ऊपर एक पॉइंट होता है, नीचे तो यार मैं कुछ भी बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, राइट? हाँ, पॉलीगन, एनी पॉलीगन, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी बनाओ यार. पिरामिड के ऊपर भाई एनी पॉलीगन, डी पार्ट. Decimal expansion of root 5 is terminating, non-terminating, non-terminating, non-repeating. 2.23, ये तो repeat हो गया. Of course, non-terminating, non-repeating. It's very straightforward, guys. अब assertion reason आ गया. Important one. Think about it. Infinite number of lines which passes through 2,14. Of course, एक point से कितनी lines pass होती हैं? Infinite. Absolutely true. Linear equation and two variables have infinitely many solutions. That is also true. Both are true, but इसका इससे क्या लेना देना है? Absolutely nothing. Not the correct explanation. Answer is B part. 28. If the diagonals of the rhombus are 8 centimeter and 12 centimeter, okay, वो कह रहे 96 centimeter square होगा. एरिया में निकाल ही लेता हूं. मैच हो गया तो ट्रू हो गया, नहीं तो गड़बड़ है. Half 8 into 12. 2 6. 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. लो, ये तो 96 वोल्ट, ये तो फॉल्स. जैसे ही मेरे को असर्शन फॉर्म्स मिला, मींस इट इज दिल्ली डी पार्ट. ठीक है, बट हम ये चेक कर लेते हैं. एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ d1 d2, d1 and d2 आर द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स. एब्सोल्युटली दिस स्टेटमेंट इज. लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन बी. Let's move on to section B of the paper. Now, it has 5 questions, 2 marks each. Let's start with the first one, 21st question. X and Y are 2 points on equal sides AB and AC of triangle ABC, such that AX is equal to AY. Prove that XC is equal to YB. So, visualize करना सबसे पहले ज़्यादा important है. मेरे को already बोला हुआ है AB is equal to AC. Right? Now, X and Y are 2 points on equal sides. मतलब कि AB और AC मुझे equal दिए हुए हैं. Right? ये दोनों sides equal हैं.
यहां पे मैंने पॉइंट x मार्क किया और इस पे मैंने पॉइंट y मार्क किया। साथ में उसने ये भी कह दिया भाई ax और ay भी इक्वल हैं। ठीक है, ये भी बता दिया मुझे। मुझे xc चाहिए और y भी चाहिए, तो मैं x से c को ज्वाइन कर लेता हूं और y से b को ज्वाइन कर लेता हूं। अब xc और yb को इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हैं? Of course, there is only one method, that's called congruency. So let me take the triangle as A, B, Y, and triangle A, C, X. Now, in this, AB is equal to AC. It's already given. ठीक है, ये तो मेरे पास आ गया given का part. What else I know? AY is equal to AX. Again, it is given. Now, I need one more thing. You can take it as angle A. यहां पे भी एंगल A which is common. That's simple. So triangle ABY is congruent to triangle ACX. Which rule? SAS rule of. That's it. SAS rule से congruent हो गए. We can say BY जो मुझे चाहिए and CX are equal through CP. There you go. Question number 22. अब x की वैल्यू मुझे दी हुई है k स्क्वायर, y की वैल्यू दी हुई है मुझे k, इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन है मींस x एंड y की वैल्यूज अगर मैं पुट करूं, इट मस्ट सैटिस्फाई द इक्वेशन, राइट? सो x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 मुझे दिया हुआ है। x की जगह k स्क्वायर, सो ऑफ कोर्स मैंने यहां पे k स्क्वायर कर दिया, माइनस 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। व्हाट टू डू नाउ? यहाँ पे y कैसे आ गया? यहाँ पे तो k आना चाहिए, y की जगह k डाला था। व्हाट टू डू नाउ? क्या करें? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दो नंबर्स को ऐड किया, ऑफ कोर्स माइनस 5 बनना चाहिए, और उन्हीं दोनों नंबर्स को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या बनना चाहिए? 6, वो भी पॉजिटिव 6। व्हाट आर दोस टू नंबर्स? 2 3 6। ठीक है, यहां पे भी 2 3 6 बन तो रहा है, बट माइनस 5 भी तो बनना चाहिए, दोनों को नेगेटिव कर दो। यहां पे साइन पॉजिटिव रहेगा, यहां पे साइन नेगेटिव रहेगा। वंडरफुल। सो के स्क्वायर माइनस 2k प्लस नो माइनस 3k plus 6 is equal to 0. So k can be taken out common from the first two. So k minus 2 and minus 3 can be taken out from the later two. So k minus 2, which is equal to 0. So k minus 2 is common and k minus 3 remains behind. So I need to find the values of k. Either k minus 2 is 0 or k minus 3 is 0. दोनों में से एक भी 0 हो गया, ऑफ कोर्स 0 तो बन ही गया ना। सो k की वैल्यू आई कैन पुट इट एज 2 और k की वैल्यू आई कैन पुट इट एज 3, जिसके लिए ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0। दैट्स इट। x1। इसका एक और पार्ट भी था। x की जगह 2k minus 1 and y की जगह k is again a solution of this equation. Find the values of k. Wonderful. So my equation is 3x minus 5y minus 7 which is equal to 0. x की जगह मैंने क्या पुट करना है? मस्ट सेटिस्फाई, तो x की जगह मैं 2k minus 1 पुट कर देता हूं और y की जगह मैं k पुट कर देता हूं। minus 7 is equal to 0. So this comes out to 6k minus 3 minus 5k minus 7 is equal to 0. So this comes out to k minus 10 is equal to 0. So k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? That's it. Even more simpler. Next one. State Euclid postulate number 1 and postulate number 5. It is already written over here. Postulate number 1 क्या कहता है? A straight line may be drawn from any one point to any other point. Right? ये postulate number 2 नहीं है, ये postulate number 5 है. Mistaken. So, if a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together is less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. Right? Question number 24. Up. 24 पे चलते हैं. In the given figure,
EB is parallel to EE. ये लाइन दोनों क्या है? DE, ओके, यहीं पर ही AB is parallel to DE दिया हुआ है, BD ओके is parallel to FG, ये भी दिया हुआ है। मेरे को एंगल B 55 डिग्रीज दिया हुआ है, FGH 125, it is already marked. Find the value of X, मेरे को ये एंगल निकालना है। So now with the very first one मैं ये 55 को ट्रांसपोज कर सकता हूं टू एंगल D, क्यों? AB is parallel to DE. So angle B is equal to angle D, क्यों? Alternate interior angles. So this is given as 55, which is equal to angle D. ये एंगल आ गया मेरे पास 55 degrees. अब this can again be transposed over here, right? So अगर मैं लूं CD is parallel to जो दिया हुआ है CD, नहीं CD नहीं दिया हुआ है, एक्चुअली BD दिया हुआ है, तो ये पूरी लाइन ले लेते हैं यार, CD लिया था मैंने तो चलो, BD is parallel to FG मुझे दिया हुआ है ऑलरेडी, so I can say angle D is equal to angle F, क्यों? Alternate interior angles, ठीक है? So angle D was already given as 55, so angle F is also given as 55 degrees, ये भी दिया हुआ है। अब मेरा 55 यहां पहुंच गया, 125 का अभी तक यूज नहीं किया, इट इज द एक्सटीरियर एंगल, राइट? सो ट्राइंगल कौन सी देखें? ई एफ जी। अगर हम ट्राइंगल ई एफ जी को ध्यान से देखें, उसके अंदर दिस एंगल, इसको मैं ले लेता हूं एंगल वन प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, राइट? क्यों? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है? will be sum of opposite interior angles. Angle 1 is x, which is to be found out. Angle F is 55, so this becomes 125, right? So मेरे को angle x की वैल्यू चाहिए मुझे, that is quite simple, that comes out to कितना आएगा? Angle x would be 125 minus 55, that is 7070, ठीक है? और y, एक्चुअली यही y दिया हुआ था, इट वाज नॉट मार्क प्रॉपर्ली ओवर हियर, सो एंगल y यहां से मैं ऑलरेडी निकाल चुका, राइट? सो एंगल y यहां पे आ चुका है, दैट इज 55 डिग्रीज, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 24 का ही एक और पार्ट भी था, लेट्स गो विद इट। AB डिवाइड्स DAC, AB का है ये रही, DAC का ये रहा, इन the ratio 1, मीन्स इन एंगल्स की बात कर रहा हूं, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 बाय एंगल 2 इज 1:3। मेरे को एक और चीज दी हुई है, AB इज इक्वल टू DB, वंडरफुल, AB इज इक्वल टू DB दिया हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ A C B, आई नीड टू फाइंड द साइन, राइट? एक काम करते हैं, लेट एंगल 1 बी x, so angle 2 will be, so now I took this as x, this as 3x, right? And this is, of course, it is given as 108 degrees. मेरे को इस एंगल पे आना है, इस एंगल के लिए आई नीड दिस एंगल, एंगल ऑफ प्रॉपर्टी तभी लगेगी, या फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी तभी लगेगी, राइट? व्हाट कैन यू से अबाउट दिस एंगल? ये एंगल, मैं ट्राइंगल कौन सी लूं? AB इज इक्वल टू DB, मतलब कि ट्राइंगल ABD क्या बन गई? आइसोसेलेस। सो आइसोसेलेस बन गई, सो मैं इसको ले लेता हूं एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, so angle 1 is x, so angle 3 is again x, this is again x. अब मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, मैं इसके साथ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दूंगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। x की वैल्यू कैसे आएगी? ऑफ कोर्स DAE क्या है? स्ट्रेट लाइन है, राइट? DAE अगर स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, सो आई कैन से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल कौन सा? CAE, the exterior angle CAE is 180, right? क्यों? Linear pair. So angle 1 is x, angle 2 is 3x, CAE is 108, which is equal to 180.
सो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 4x, राइट। 4x की वैल्यू आ जाएगी 72, सो x की वैल्यू आ जाएगी 18. Oh, this angle becomes 18. Wonderful. My problem is already sorted. Can you see? मेरे को 3x की वैल्यू चाहिए ही नहीं है, मेरे को सिर्फ ये 18 चाहिए था. Angle 3 comes out to be 18. I should write it because it is going to be used. So triangle कौन सा देखें? ACD. Can you see angle ACD? Angle 3 plus angle ACB is equal to CAE. Angle 3 is 18. ACB, ACB नहीं, हाँ ACB मेरे को चाहिए था, angle ACB, and CAE is 108. So I can find angle ACB 108 minus 18, that gives out to be. इतना ही सिंपल था. यहां पे मैंने एनालिसिस किया दो में, पहला फाइंडिंग, दूसरी फाइंडिंग, एंड फुल 2 marks in your bag. Next one. Question number 25. C is a point on the minor arc AB of a circle with center O. Given ACB as X and AOB as Y, then express Y in terms of X. Also, if ACBO is a parallelogram, find the values of X and Y. किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले विजुअलाइज तो करो. उसने बोला C is a point on the minor arc AB. भाई पहले तो हम सर्कल बना लेते हैं, फिर मैं मार्क कर लेता हूं माइनर आर्क AB. ये ले लिया मैंने सेंटर, इस पे एक पॉइंट लिया मैंने C. ठीक है, अब उसने कहा ज्वाइन कर दो, मैंने ज्वाइन कर दिया, राइट. अब ACB को मैंने ले लिया X एंड AOB को मैंने ले लिया Y. एक्सप्रेस Y इन टर्म्स ऑफ X, फिर आया ऑल्सो, तो यहां पे लग गया फुल स्टॉप. ऑल्सो वाली टर्म उसके बाद ही होगी, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. एक्सप्रेस Y इन टर्म्स ऑफ X, राइट. अब एक्सप्रेस Y इन टर्म्स ऑफ X, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. इट्स नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बट मैं X को यहां पे तो ले जा सकता हूं, राइट. सो मैं कह सकता हूं ACB इज इक्वल टू, ठीक है, हाफ, या फिर उल्टा कर देते हैं, 4 times ACB is equal to reflex of angle AO. Angle at the center is twice the angle at any other point on the circle, right? So ACB was given as X, so ये आ गया 2X. So मेरे पास आ गया reflex angle AOB, right? ये तो मैंने निकाल लिया. अब क्या करें? मेरे को एक चीज तो पता है, AOB प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOB का सम कितना होगा? 360, the entire circle, right? So AOB was given as Y and the reflex angle of AOB is given as 2X, which is equal to 360. I can write Y as 360 minus 2. ये तो मुझे मिल गया, राइट. एक तो मैंने कर दिया. अब इसके बाद उसने नेक्स्ट टाइम पे क्या बोला? ACBO is a parallelogram. ACBO is a parallelogram. Ab ACBO is a parallelogram, I can say ACB and AOB are equal. Angle ACB and angle AOB are equal. So अब इन दोनों को मैंने इक्वल प्रूव करना है, तो कैसे बोलूंगा? भाई इट इज अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो ACB मेरे पास X था, AOB मेरे पास Y था, एक यहां से मिल गया मेरे को. Now I already know that Y is equal to 360 minus 2X, right? मैं Y की जगह X डाल देता हूं, ये आ गया 360 minus 2X, so 3X is equal to 360. X की वैल्यू आ गई 120. So now X is 120, Y is again
यहां से मैंने ये लिख लिया, दैट्स इट। अब ये आपके 2 मार्कर क्वेश्चंस खत्म। लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन सी। अब सेक्शन सी के अंदर ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। इंपॉर्टेंट, ABCD is a square. Okay? ABCD is a square. APB is an equilateral triangle. Okay, it is an equilateral triangle. Done. Prove that PAD, PAD सबसे पहले तो ये एंगल की बात करी उसने, इज इक्वल टू CBP, इस एंगल की बात, राइट? इसको करना है। अब ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, ABCD इज स्क्वायर, राइट? सो ईच एंगल, मैं इसको एंगल 1 ले लेता हूं, इसको एंगल 2 ले लेता हूं। Angle 1 is equal to angle 2, of course, and each is equal to 90 degree। यहां से लिखा। अब मेरे को एक और चीज पता है, ट्राइंगल ABP is equilateral, इसका यूज करते हैं, राइट? अब मैं यहां पे लिख लेता हूं इसको एंगल 3 एंड इसको लिख लेता हूं एंगल 4। एंगल 3 is equal to एंगल 4, which is nothing but 60 degree each, राइट? ये मुझे दिया हुआ था। सो व्हाट कैन आई डू? एंगल 1 प्लस एंगल 3 मेरे को एंगल PAD बनाना है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल PAD एंड एंगल 2 प्लस एंगल 4, इसको 4 पूरा ठीक से, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू एंगल CPB, CBP, नॉट PB, CBP, राइट? ये पार्ट तो मेरा हो गया प्रूफ। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल्स का सम इज 150 डिग्री, राइट? फर्स्ट पार्ट इज डन। नेक्स्ट बोला उसने PD इज इक्वल टू EC, ये और ये इक्वल होने चाहिए जी। ये करो प्रूफ। इसको कैसे करें? भाई PD और PC को इक्वल करना है, आई नीड ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी कर देंगे, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं ट्राइंगल लूंगा PAD, राइट? नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं ट्राइंगल PAD and the other triangle would be PBC, right? अब इसके अंदर मुझे PA is equal to PB पता है। क्यों? इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक चीज तो पता है। What else I know? AD BC के बराबर है, AD is equal to BC। क्यों? स्क्वायर। वंडरफुल। What else? मेरे को PAD अभी तो किया है, PAD किसके बराबर है? PBC के बराबर है। PBC के बराबर है, क्यों? 150 डिग्री ईच, या फिर मैं सिंपल 1 भी लिख सकता हूं जो मैंने प्रूव किया है। सो एंगल PAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBC, राइट? अब मैं क्या कर सकता हूं? PD इज इक्वल टू PC, जो मेरे को प्रूव करना था, नॉट PD इज इक्वल टू PC। क्यों? CPCT। नंबर कटेंगे। क्यों? मैंने ये तो लिखा ही नहीं किस रूल से हुआ, SAS रूल। इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट इट गाइस, ध्यान से, राइट? PD PC के बराबर हो गया, मींस ये B पार्ट भी हो गया, राइट? अब APD, मेरे को ये एंगल प्रूव करना है 15 डिग्रीज। ओके, मतलब कि मेरे को PAD के अंदर ही रहना पड़ेगा, ट्राइंगल PAD, राइट? इसी के अंदर रहना पड़ेगा। मेरे पास एंगल A तो आ चुका है, मैं इसको ले लेता हूं एंगल APD, इसको APD ही रहने देते हैं और इसको ADP ही रहने देते हैं। करें क्या? APB is a equilateral triangle, APB equilateral triangle, ठीक है? PAD के अंदर चलना है मेरे को, ABP equilateral है, तो मैं यहां से कुछ डिड्यूस कर सकता हूं। क्या डिड्यूस कर सकता हूं? PA AB के बराबर है, PA is equal to AB,
राइट, ये इंपॉर्टेंट चीज ले ली। इसके बाद मुझे कुछ और भी पता है। क्या पता है? एबीसीडी स्क्वायर है, इससे भी कुछ ले लेते हैं। एबीसीडी मेरे पास स्क्वायर है, इससे कुछ डिड्यूस कर लेते हैं। क्या डिड्यूस करें? एबी एडी के बराबर है, एबी ईडी के बराबर है। सो इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं सीधा कह सकता हूं पीए और एडी दोनों इक्वल आ गए, राइट। इस ट्राइंगल के अंदर पीए और एडी इक्वल आ गए मेरे पास, पीए एंड एडी इक्वल आ गए, मींस ट्राइंगल पीएडी क्या बन गई? वंडरफुल, आइसोसेलेस बन गई। वैसे ही मुझे पता चल गया एपीडी, एपीडी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? एडीपी के, एडीपी के। ये दोनों इक्वल हो गए, आइसोसेलेस। नाउ द ओनली थिंग आई रिक्वायर इज एंगल सम प्रॉपर्टी। सो मेरे पास कौन सा एंगल निकालने को बोला था उसने? डीएपी गैप प्लस एपीडी प्लस एडीपी इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी। पूरा लिखना पड़ेगा गाइस ध्यान से। ये तो मेरे पास 150 दिया हुआ है, एपीडी तो मुझे चाहिए, मैं इसको चेंज कर लेता हूं। एपीडी एंड एडीपी को मैं एपीडी में चेंज कर देता हूं, which is equal to 180. So 2 times APD is equal to 30. APD is equal to set. ये हो चुका, राइट। नेक्स्ट पार्ट, इसका एक और पार्ट भी था इसी सेम क्वेश्चन का। लेट्स डू इट। ABCD is a square. No, ABDF is a square. हर बार ABCD कर देते हैं। ABDF is a square. ये दिया हुआ है। BC is equal to EF. BC is equal to EF marked भी है। In the given figure, ABC कहाँ है? ABC ABC ये वाली ट्राइंगल एंड AFE ये वाली ट्राइंगल, इनको क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट। और सिंपल टास्क, कुछ भी नहीं है। ABC एंड ट्राइंगल AFE, इसके अंदर AB किसके बराबर आया? AF। क्यों? स्क्वायर। व्हाट एल्स? एंगल B एंगल F के बराबर है। क्यों? 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री। क्यों? स्क्वायर। व्हाट एल्स? मेरे को एक चीज तो पता ही है, BC इज इक्वल टू FE। क्यों? गिवन है, गिवन। ठीक है, सो मैंने सीधा कह दिया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AFE। कौन सा रूल? SAS। पहला टास्क तो हो गया। नेक्स्ट पे चलें। ACG, ACG का है? ACG ये रहा, और AEG ये रहा। इन दोनों ट्राइंगल यहां पे डबल लगा देते हैं। मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ACG एंड ट्राइंगल कौन सा? ट्राइंगल AG, राइट। मेरे को इसमें क्या पता है? मेरे को ये पता है, इसको एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल 2 ले लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 90 ईच, 90 ईच गिवन। और कुछ दिया हुआ है? नो, और कुछ तो दिया नहीं हुआ। नहीं, एक चीज तो मेरे को पता है, AG इज इक्वल टू AG। क्या है? कॉमन। दूसरा भी मिल गया। नाउ आई नीड द थर्ड वन। मैं सिंपल यहां से तो यही कह सकता हूं, AC इज इक्वल टू AE। CPCT पिछले वाले से तो ले ही सकते हैं, तो मैं यहां पे रख देता हूं AC इज इक्वल टू AE फ्रॉम A to B CPCT, राइट। ये यूज किया, मैंने सीधा बोल दिया ट्राइंगल ACG इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AEG। ये दोनों मेरी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। क्यों ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट? एक ही रूल लगा, 90 डिग्री। देखो मेरे पास ये ट्राइंगल ना, ये वाली साइड, ये वाली साइड, मेरे पास ये कॉमन, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूज आया,
तो RHS रूल ध्यान से गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे, बी पार्ट हो गया। लो पहले वाला पार्ट यहाँ पे हो गया था, दूसरे वाला पार्ट यहाँ हो गया। नेक्स्ट वन, 27th क्वेश्चन, राइट? इफ root 2 plus root 3 by 3 root 2 minus 2 root 3 is equal to a plus b root 6, find the value of a and b. A and b मतलब कि यार इसको क्या करूं? Rationalize, the only thing I can do is rationalize root 2 plus root 3 by 3 root 2 minus 2 root 3. तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 3 root 2 plus 2 root 3 and 3 root 2 plus 2. क्या आया? अब क्या करूं भाई? मैं एक ही चीज कर सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, राइट? सो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 3 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर, राइट? न्यूमरेटर में क्या आएगा? रूट 2 हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3. इसको मैं स्लो इसलिए लेके जा रहा हूं, इट हैज टू बी वेरी केयरफुली डन, अदरवाइज वील मेक अ मिस्टेक. 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगे, राइट? सो न्यूमरेटर में क्या आएगा? 3 इंटू 2 6 प्लस 2 रूट 6 प्लस 3 रूट 6 प्लस यहां पे आ गया 2 3 6, बिल्कुल ठीक है, राइट? और नीचे क्या आएगा? 9 2 18 माइनस यहां पे आ जाएगा 4 3 12, राइट? अब क्या करें? मैं इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और तो कुछ करने का है ही नहीं. 12 प्लस 5 रूट 6 बाय 6, राइट? अब क्या करें? यहां पे 12 बन गया, यहां पे 5 रूट 6 बन गया, नीचे 6. तो मैं एक ही काम कर सकता हूं, 12 by 6 plus 5 root 6 by, that has to be compared with a plus b 6. ये आपका राइट हैंड साइड वाज कंटिन्यूड इन द सेम फैशन, उसका काम सिर्फ लास्ट में होता है, इसका काम लास्ट में करना. 6 2 is 12, this comes out to be 2. 5 by 6 root 6 is equal to a plus b 6. तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 by 6. a is 2, b is 5 by 6. That's it. Next question. Question number 28. When f of x is given divided by x plus 1 and x minus 1, we get remainder as 10 16. Remainder आ गया मेरे पास 10 and 16 respectively. Find m and n. Okay. So हमने क्या लगानी है? Remainder theorem. That's it. और remainder theorem क्या कहती है? f of -1, जब मैं f of -1 डालूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा. सो -1 की पावर 4, -4 -1 का क्यूब प्लस 8 इंटू -1 का स्क्वायर minus m minus 1 plus this will give me the remainder, which is equal to already given as 10. So ये आ गया 1, यहां पे माइनस आना था, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो गया, यहां पे प्लस 8 हो गया, यहां पे m आ गया, यहां पे n आ गया, which is equal to 10, right? So m plus n is equal to -3, right? Next, रिमाइंडर थ्योरम x minus 1 पे भी लगेगा. अब x minus 1 से भी तो रिमाइंडर निकलेगा, राइट? f of 1. सो 1 की पावर 4, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 n is equal to 16. So 1 minus 4 plus 8 minus m plus n is equal to 16. So minus m plus n, 8 minus 4, यहां पे तो 4 रह गया, प्लस 1 5, तो 16 minus 5
is, so this is equation number 1 and this is equation number 2. I have to eliminate and get the values of m. So next page पे चलते हैं. Minus m plus n is given to be 11 and m plus n is given to be minus 3. What should I do? Add them up. Add किया, so यहाँ पे आ गया 2n which is equal to 8. So n is equal to 4. n 4 आ गया. So m plus n is equal to minus 3. m plus 4 is equal to minus 3. m is equal to minus. That's it. Next part. इसका एक और पार्ट भी था. Show that 1 by 3 and 4 by 3 are zeros of the polynomial. Also find the third zero of the polynomial. Right? So मेरे पास क्या है? Polynomial in x. P of x क्या है? 9x cube minus 6x square minus 11x plus 4. Right? उसने सबसे पहले बोला 1 by 3 is the zero of the polynomial. Right? पहले तो आपको शो करना पड़ेगा, तो P of 1 by 3 मैं निकाल लेता हूं. 9 1 by 3 का क्यूब 1 by 27 सीधा लिख रहा हूं अब मैं. Minus 6 1 by 3 का स्क्वायर 1 by 9 minus 11 into 1 by 3 plus 4. 9 3s are 27, 3 2s are 6, 3 3s are 9. So means it comes out to be 1 by 3 minus 2 by 3 minus 11 by 3 plus 4. Now you solve this, क्या आएगा? 3, ये 1, ये minus 2, ये minus 11 plus 4 3s are 12. So this comes out to be minus 13, this comes out to be 13, this comes to 0. तो मैंने शो कर दिया. अब next P of 4 by 3 निकालना पड़ेगा मुझे. 9 into 4 का क्यूब लिखना है मेरे को. 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27 minus 6, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 minus 11 into 4 by 3 plus 4. 9 3s are 3 2s are 3 3s are. That's it. So this comes out to be 64 by 3 minus 32 by 3 minus 44 by 3 plus 4. Again taking 3 as an LCM, ये तो सारे सेम ही रह जाएंगे. 64 minus 32 minus 44, 4 3s are 12. So if you solve this, you will get 0. Right? So ये भी आ गया, ये भी आ गया, दोनों शो मैंने कर दिए. Also find the third zero of the polynomial. Right? So मेरे पास दो zeros हैं, means मैं यहां से एक factor लिख सकता हूं. X minus 1 by 3 is the factor and x minus 4 by 3 is again a factor. Right? So मैं इस factor को ठीक करके लिखता हूं. मैं लिख सकता हूं 3x minus 1 is a factor and मैं यहां पे भी सीधा लिख सकता हूं 3x minus 4. ये दोनों मेरे पास क्या आ गए? फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. राइट? तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं 3x minus 1 कितना आएगा? नॉट 4x, 3x. ये दोनों क्या है मेरे? फैक्टर्स. सो मेरे को एक क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखना पड़ेगा. दिस कम्स आउट टू बी 3x को मल्टीप्लाई किया 3x minus 4 से, minus 1 को मल्टीप्लाई किया 3x minus 4 से. Has to be done carefully. So यहाँ पे आ जाएगा 9x square minus 12x. कभी भी गलती नहीं होगी. You can do this much quickly. Plus 4. So 9x square minus 15x plus 4. So ये मेरा quadratic factor आ चुका है. Now I'll do the long division. So let's see to get the answer. So मेरे पास था 9x cube minus 6x square plus minus 11x plus 4. This was the polynomial and इसको मैंने divide करना है 9x square minus 15x plus 4 से. किससे multiply करूं इसको so that 9x cube बन जाए? Of course with just x. So this comes out to be 9x cube minus 15x square and plus 4x of course. So what do? We do subtraction. So sign would change, this would go, this would change and this would change. So ये positive आ गया, this would go to 9x square
and this would go to minus 15x. This would go to plus 4. कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है? Of course, plus 1, because it is exactly the same minus 15x plus, so sign change, this goes, sign change, this goes, sign change, this goes, and this goes to 0. So x plus 1 is a factor. ठीक है? So minus 1 is the 0 of the polynomial P. Next, question number 29. Quite straightforward. Three vertices of triangle ABC. A भी दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है, C भी दिया हुआ है. Plot these points on a graph paper and find the area of the triangle so far. अब graph paper पे बनाना है. I've already drawn it for you. ये रही मेरी x axis, ये रही मेरी y axis. Of course, मेरे पास यहाँ पे this was 4 and this was 2. Somewhere here this would be 3, this would be 1. So यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा. This would be 3. Properly आपको ये graph paper पे बनाना है. So यहाँ पे 0 0, right? So आपका कुछ ऐसा बनेगा 1,4 minus, so सबसे पहला था 1,4, this was A. Next, minus 2,2, minus 2,2, this was B, and 3,2, this was C. इसका एरिया निकालना है, right? So this would be the base, right? So base के लिए I need this, right? ये कितना है? 3. And ये कितना है? So base is already given to me as 5 units, of course, and this would be height. So ये कितना है? 4 minus 2, that would be 2. Of course, you have to mention these properly. आपको already ये करना आता है. I'm just giving you a solution. Half base into height. So half base is 5, height is 2. This goes off. This goes 5 units का set. Next one, construct a histogram on the following data. Histogram आप खुद बना सकते हो very easily. I've already drawn it for you. ये x-axis, ये y-axis. You have to mention the king. Cost of living index is over here. Number of months are here, and here you have x-axis 1 unit क्या बोलता है, y-axis 1 unit क्या बोलता है. This is the scale completely clearly mentioned over here. Next one. Prove that the angle between the angle bisector of one base angle and the external bisector of the other base angle of a triangle equal to 1/2 of the vertical angles, right? मैंने एक triangle ली, इसका bisector लिया, something like this. ये bisector है, of course. ठीक है, मैं इसको ले लेता हूं A, इसको ले लेता हूं B, इसको ले लेता हूं C. Now इसका external, of course, the bisector would be somewhere like this. This would go to D. This is the bisector. ये वाला part is right. Now I have to prove, क्या prove करना है? मेरे को prove करना है angle D is equal to 1/2 of the vertical angle, half of. This is to be proved. So बोला है prove that the angle between the internal angle bisector and the external angle bisector. ये internal का था, ये external का था, इसके बीच का angle is equal to 1/2 of the vertical angle, half of the vertical. ये prove करना है, right? So मैं इसको ले लेता हूं 1, इसको ले लेता हूं 2. Angle 1 will be equal to angle 2 bisector, and angle 1 is equal to angle 2, and दोनों को मैं कर देता हूं equal x के. Let ये x, right? So मैं यहां पे लिख देता हूं angle 3, and this would be angle 4. Angle 3 is equal to angle 4 bisector again, which is given. So मैं इसके अंदर दे देता हूं let angle 3, which is equal to angle 4, which is equal to this go y. Now let's consider triangle ABC. Triangle ABC को consider किया. So मेरे को चाहिए angle A plus angle B.
which is nothing but angle AC. यहां पे ले लेते हैं E, ACE, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ऑफ कोर्स एंगल A मुझे चाहिए, एंगल B को मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स X और एंगल ACE को लिख सकता हूं 2 टाइम्स Y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको लिखना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। Now we'll go to BDC, another triangle, triangle BDC। इसके अंदर एंगल D प्लस एंगल 2, angle D plus angle 2, which is nothing but equal to angle 4. Again, exterior angle property, right? Now, angle D, I need it. Angle 2 is X, angle 4 is Y. This is... अब मुझे बताओ, मेरे को चाहिए क्या? D और A चाहिए। क्या मुझे X और Y चाहिए? No, we don't need it. So, put equation 2 in equation 1. So, angle A plus 2 times X is equal to 2 times Y. Y की वैल्यू मैंने दे दी D plus X. Wonderful. Angle A plus 2 times X is equal to 2 times D plus 2 times X. Right? अब मुझे क्या चाहिए? मेरे को D पे चाहिए. So 2 times angle D plus 2x minus 2x. This goes off. So angle D is equal to angle A. Done. Hence proved. इतना ही simple question था. Let's move on to the next one. The sides AB and AC, okay, of triangle ABC are reduced to P and Q respectively. Wonderful. If bisector of PBC and QCB intersect at O, मेरे को ये prove करना. Let me make the triangle. This is a triangle and I have to extend these like this. So this is ABC, extended to P and extended to, right? PBC, something like this. QCB, something like this. ये बाइसेक्टर दिया हुआ है, right? और ये भी बाइसेक्टर दिया. Let me mark these angles as 1, 2, 3 and 4. This is O. So मेरे को एंगल A भी चाहिए, BOC चाहिए, ठीक है? अब सिंपल, मेरे को एंगल CBP is equal to angle 1 plus angle 2, right? और मुझे यहां से पता है angle 1 is equal to angle 2 because it is a bisector. And मैं let angle 1 equal to angle 2 which is equal to. यहां से मैं शुरू करता हूं because मेरे को ये चीज यूज आएगी. और इधर QCB पे चलते हैं, which is equal to angle 3 plus angle 4. ये मेरे को पता है already. Angle 3 is equal to angle 4. क्यों? Bisector. एक बारी लिखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है. You have to mention it. Let angle 3 is equal to angle 4 which is equal. ये भी y, ये मैंने, right. Now मेरे को चाहिए BOC and angle A, right? So मैं start करता हूं triangle BOC से ही, which is easy. मैं इसको सिंपल लिख सकता हूं angle 2 plus angle 3 plus angle BOC which I need is equal to 180. Y angle sum property. आपको ASP नहीं लिख सकता, angle sum property लिखना पड़ेगा. This is X, this is Y plus BOC is equal to 180. Let me take it as 1. ठीक है? मैं इसको कैसे यूज करूंगा वो आगे देखेंगे, अभी मेरे को क्या पता कैसे यूज करना है, राइट? लेट मी टेक एंगल ए के लिए ट्राइंगल ABC. सो एंगल ए तो मुझे चाहिए ही चाहिए, प्लस angle B means I need this angle. Let me take this as 5 and angle this 6. Angle 5 plus angle 6. Angle 5 plus angle 6 is equal to 180
एंगल सम, एंगल ए आई नीड, अगर मुझे किसी तरह से एंगल 5 एंड एंगल 6 मिल जाए, मेरी प्रॉब्लम इज सॉल्व, राइट। अब मेरे को पता है ए बी पी, ठीक है, एंड मैं दूसरी तरफ से क्यू सी ए, स्ट्रेट लाइंस है, लीनियर पेयर क्या यूज करूंगा, स्ट्रेट लाइंस है। सो मैं सिंपल लिख सकता हूं व्हेन एबीपी इज अ स्ट्रेट लाइन, 1 2 एंड 5, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। यहां से यूज करेंगे लीनियर पेयर का, this was given as x, this was given as x, angle 5 I do need it, which is equal to 180, so angle 5 is equal to 180 minus 2, very very important to put, ठीक है। सो यहां पे मैं बिल्कुल सिंपली लिख सकता हूं 3 4 एंड 6, एंगल 3 प्लस एंगल 4 plus angle 6 is equal to 180, which is nothing but linear pair. Angle 3 is y, angle 4 is y, angle 6 I do need it, so angle 6 की वैल्यू मैं लिखूंगा 180 minus 2y, इसको एंगल, इसको इक्वेशन 3। यहां पे मैंने दोनों पुट किया, 180 minus 2x plus 180 minus 2y equal to 180। एंगल ए मुझे चाहिए, so let's put it over there, 2x plus 2y plus 180 minus 360. So angle A is equal to 2 times x plus y minus 360. This is given to me. So x plus y, मैं x plus y निकाल सकता हूं? Yes, यहां से x plus y can be taken as 180 minus b, क्योंकि मेरे को x BOC चाहिए और x plus y नहीं चाहिए. So 180 minus BOC, I'll put it over here. Angle A, okay, यहाँ पे 180. This is plus 180, this is minus 360. So angle A is equal to 2 times, यहां से मैंने पिक किया 180 minus BOC minus 180. So angle A is equal to 360 minus 2 times angle BOC, and यहाँ पे आ गया minus 180. So this is formally done. Angle A is equal to 180, 2 times angle BOC. Wonderful. This is what was needed. No, मेरे को तो angle BOC की वैल्यू चाहिए. So कुछ भी नहीं है. Let's do it properly. मेरे पास ये है. So मैं सब कुछ चेंज कर देता हूं. 2 times angle BOC को लिख सकते हैं 180 minus A. Right? So angle BOC मेरे को चाहिए. Angle BOC को मैं लिख सकता हूं 180 minus A. So BOC की वैल्यू क्या आ जाएगी? That would be 90. 180 by 2, that is 90 minus angle A by. This is your final. Yeah, that's simple, right? Next one, section D. Now, section D has 4 questions, 5 marks each. Let's start with the very first one. Chord ED is parallel to diameter AC दिया हुआ है, center O दिया हुआ है, CBE 65 दिया हुआ है. Calculate the following angles and give the reasons for each. CAE, this angle. Angle CAE is equal to angle CBE. Why? क्यों है? Angles in the same segment. ठीक है, अपने आप लिख लेना. Angles in the same segment, so CAE is going to be nothing but 65. First one done. A part is done. This is 65. Next, AEC. This angle AEC is equal to 90 degree. Angle in a semicircle. Angle in a semicircle. Right? B part done. 1 mark एक और मिल गया. ACE, this angle. ACE निकालना है मुझे. So triangle ACE ले लेते हैं भाई, बिल्कुल सिंपल है. ACE के अंदर I know CAE and I know AEC.
and I need to find ACE, which is equal to 180. Angle sum property, bilkul simple. Now, CAE is given to be 65. This is given to be 90. ACE, which is equal to 180. So now I can find ACE 180 minus 90 minus 65, which is going to give you 25 degrees. See how simple. Now this is 25 degrees. ये भी आ गया. DEC. DEC is this. So I can seriously say DEC is equal to ACE. Alternate interior angles. Lines are parallel. C is parallel to ED. This question is becoming the simplest one. 5 chote questions and getting to 5 marks in total. So DB ho gaya. Now CDE, you have to join this and get this angle CDE. CDE कैसे मिलेगा? अगर आप देखो EDCB, EDCB is a cyclic quadrilateral. Right? Cyclic quadrilateral hai. So CDE, DE plus angle CBE, which was originally given, the sum is 180. Right? It's a cyclic quadrilateral, opposite angles ka sum is 180. Just write it down. So CDE plus 65 will give you 180. So angle CDE will give you 115. Full 5 marks in the bag. इसका एक और पार्ट भी था. If two equal chords of a circle intersect within the circle, wonderful, equal chords हैं, intersect within the circle. NCERT का ही लग रहा है क्वेश्चन. Okay, ये एक है, ये दूसरी है. So I will say AB and CD are equal chords. It is already given. AB is equal to CD. Segments of the chord are equal to the corresponding segments of the other chord. Okay, this comes out to be O. O is the center. So segment means मेरे को P यहाँ पे ले लिया. So I need to prove AP is equal to BP and BP is equal to CP. ये मुझे क्या करना है to prove? What should I do? Drop a perpendicular. OM perpendicular and ON perpendicular. OM is perpendicular on AB and ON is perpendicular on, perpendicular on CD. This is construction, right? The first step. Now, AB is equal to CD. If the chords are equal, perpendicular distances from the center are equal. So OM is equal to ON. It is given. We know this. So ये इसके equal आ चुका है. What should I do next? 90 degrees मुझे मिल चुके हैं. So join O to P. O. Now see the triangle OMP. Triangle OMP. Right? And triangle ONP. Now I have OM is equal to ON. From इसको मैं लिख लेता हूं equation number 1, right? Angle M, angle N, 90 from construction, right? What else? OP is equal to OP. Q, common? Wonderful. So triangle OMP is congruent to triangle ONP. Excellent job done. So ये किससे हुआ? RHS rule. Wonderful. RHS rule से हो गया. So what did I get from here? मेरे को मिला क्या क्या? Let's see. MP and NP are equal.
एंड आई इवन कैन से, मतलब कि इसके अंदर मेरे को कुछ और चाहिए होगा, मैं यहां लिख लूंगा, ठीक है, मेरे को क्या पता क्या चाहिए, मैंने ये लिख लिया बस, आई नीडेड दिस, सो आई कैन से MP is equal to NP, this is equation number 2, right? So perpendicular from the center to the chord, so AM is equal to ND, ये तो मुझे पता है ऑलरेडी, मेरे को लिखना पड़ेगा AB is equal to CD, sorry, AB is equal to CD, it was given, so half of AB, I can say half of AB is equal to half of CD, right? So half of AB क्या होगा, AM is equal to ND, ना DN, इक्वेशन नंबर 3, और इस पे रीजन लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, राइट? AM और DN इक्वल आ गए, इक्वेशन नंबर 2, in equation 2 and equation 3, add them up, MP AM is equal to NP DN, यहां पे क्या आ जाएगा, MP and AM, so AP, which is nothing but equal to DP, AP and DP, they are equal, wonderful, so एक पार्ट तो मुझे मिल गया, दूसरा पार्ट चाहिए, AB is equal to CD मुझे दिया हुआ है, I can subtract AP and यहां पे DP because they both are equal, AB में से, पूरे AB में से AP निकाल दिया तो मेरे पास क्या बचा, BP, और पूरे CD में से DP निकाल दिया, क्या बचा, CP, सेकेंड पार्ट आई गॉट, तो ये मेरा पार्ट A कंक्लूड हो गया। पार्ट B भी कुछ कहता है, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स, अल ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है, मैं यहां पे ये एंगल को इक्वल प्रूव करना है तो मैं इसको 1 ले लेता हूं, इसको 2, ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है जब मैंने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहां से ही प्रूव कर दिया था, दिस प्रूव्स 5 मार्क्स। नेक्स्ट वन, द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर of radius, the surface area of sphere of radius 5 centimeters is 5 times the area of the curved surface of the cone of radius 4 centimeters. Find slant height of the cone, height of the cone, volume of the cone and volume of the sphere, right? मैं एक sphere ले लेता हूं, इसका रेडियस मैंने दे दिया r which is given to be 5 centimeters, और एक मैंने ले लिया cone, right? इसका मैंने रेडियस ले लिया कैपिटल R which is taken to be 4 centimeters. मेरे को एक चीज दी हुई है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 5 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये दिया हुआ है। व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 pi r square and 5 times curved surface area of a cone, pi r l. L is the slant height. Here, L is the slant height. I have to mark it so that you can understand. So 4 into pi into 5 ka square, which is 5 into pi into r. R मेरे को दिया हुआ है 4. I can find L from here very easily. So 4 pi into 25 by 5 pi into 4. So 4 goes off, pi goes off, this goes off, L is equal to 5. I got the first one, slant height is done, right? Now I need to find the height of the cone. This is H, height of the cone. Height of the cone कैसे निकलेगी? भाई, of course, this is 90, Pythagoras theorem. So L square is equal to R square plus H square. So L square. अब R क्या है यहाँ पे मेरे पास? Capital R, of course, that is 4 square. And L तो मुझे दिया हुआ भाई, अभी तो निकाला है 5 square. Of course, I need to find H square. So this is 25 minus 16 is going to give you H square. This is 9, which is H square. So H is equal to 3 centimeters. Second thing is also done. Height of the cone is done. Volume of the cone.
Okay, so volume of the cone is 1/3 pi, कौन है r square, कैपिटल R लिया था मैंने, r square h 1/3 and pi is 22/7, r मुझे दिया हुआ है, r is 4 into 4 into 3, so 3 goes off. Of course you'll get this in fraction 352/7 centimeter cube, and अगर आप पॉइंट्स में निकालोगे 50.285. This goes off part C, so part C is done, and the volume of the sphere would be 4/3 pi r cube. So this is 4/3, that is 22/7. R is 5. A cube means 5 into 5 into 5. So this goes off to 1100 by 21 centimeter cube, which is nothing but 11,000. Sorry, 1100 not 10 bhi to bacha. 11,000 by 21. So this comes out to be 523.809 centimeters. That's it. Next one. इसका एक और पार्ट भी था. If the radius of the sphere is increased by 10%, prove that the volume is increased by 33.1%. Okay. So देखो, एक sphere ये रहा, ठीक है, इसका radius r था. Let's take this radius is r1. So इसका radius r1, मतलब कि first वाले का r1 ले लिया, ठीक है. So I can find volume 1, which would nothing but be 4/3 pi r1 का क्यूब, एंड r1 को मैंने r दिया है 4/3 pi r क्यूब, राइट. अब हल्का सा स्फीयर बड़ा हो गया, इसको मैं बोल देता हूं r2, हल्का सा बड़ा हो गया. अब वो कह रहा है कि रेडियस 10% इंक्रीज हो गया, तो r2 was r plus 10% increase in r, which is nothing but r plus 10% of r, right? This comes out to be 11r pi, and this is r2. I can find the volume very easily. Volume 2, 4/3 pi r2 का क्यूब, बट r2 तो अब चेंज हो चुका है मेरे पास, 4/3 pi. So this would be 11r by 10 का क्यूब. So यहां पे आ जाएगा मेरे पास 4/3 pi r क्यूब. इसके साथ आया मेरे पास 1331 by 1000, राइट. अब ये तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, ये मेरे पास V2 चल रहा है, so ये कितना है, V1 into 1331 by 1000. 4/3 pi r cube is V1, right? So अब मेरे को निकालना है कि भाई कितना इंक्रीज हुआ. इंक्रीज, अगर मैं आपको एक दे दूं 8 और दूसरा दे दूं नंबर 10, इंक्रीज कितना हुआ, 10 - 8 करके ही करोगे. सो ऑफ कोर्स मैं इंक्रीज जब निकालूंगा V2 - V1 करके ही निकालूंगा. So this one was 1331 by 1000 V1 minus V1. Of course, I can take V1 as common. 1331 by 1000 minus 1. So V1 was 1331 minus 1000 by 1000, right? So this was, sorry, this was, has to be V1. So 331 by 1000. This was increase. Now I need to find increase in percentage. जैसे ही मेरे को increase in percentage चाहिए, so मेरे पास अभी जो बना है, that is 331 by 1000 V1 by divided by V1 into 100. So V1 goes off. This one was 331 by 1000 into 100. This goes off, and this be 33.1. That's it. Full 5 marks yours, right? Ab
क्वेश्चन नंबर 34, स्टेट मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, दोनों को पहले स्टेट करो, एंड ऑल्सो प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज rhombus. Okay, let's see. देखो मिड पॉइंट थ्योरम, line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. This is midpoint theorem. Converse, a line through the midpoint of a side of a triangle parallel to another side bisects the third side. That's it. ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से आती हैं. Let's go with the question. Quadrilateral formed by joining the midpoints of the adjacent sides of a rectangle. First, let me make a rectangle. ये रही दोनों रेक्टेंगल्स, ये ये ये. This is A, this is B, this is C, this is D. A, B, C, D. These are P, Q, R, S. P, Q, R, S मेरे पास आ गए पॉइंट्स. ठीक है, अब मेरे को प्रूफ क्या करना है? P, Q, R, S इज अ rhombus. सबसे पहला rhombus प्रूफ करने से पहले देखो मेरे को प्रूफ करना है P, Q, R, S क्या हो जाए? rhombus. ठीक है, सो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखा करो, P, Q, R, S को सबसे पहले मैं प्रूफ करूंगा पैरेललोग्राम, उसके बाद ही मैं प्रूव कर सकता हूं rhombus. ठीक है, हमेशा सोचना ऐसे है, ज्योमेट्री इज क्वाइट सिंपल अगर थिंकिंग राइट वे में रखोगे तो. सो P and Q are midpoints, of course I know, so just make the diagonal AC. ठीक है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ज्वाइन A टू C. अब बिल्कुल सिंपल ट्राइंगल ABC लो. जैसे मैंने ट्राइंगल ABC ली, इसके अंदर P and Q are of course मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी. ठीक है, ए बी एंड बी सी आपको वो लिखना पड़ेगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम भी आपको लिखना पड़ेगा. जैसे ही आपने मिड पॉइंट थ्योरम लिखी तो मैं क्या कह दूंगा? पी क्यू क्या है? पैरेलल टू ए सी है, एंड पी क्यू क्या है? हाफ ऑफ ए सी. राइट, सेम वे, एग्जैक्टली इन द सेम वे आई कैन से ट्राइंगल ए सी डी को देखो, R and S are midpoints of CD and AD by midpoint theorem. लिखना पड़ेगा आपको पूरा. हम सीधा कह सकते हैं RS is parallel to AC and RS is equal to half of AC. So now with the first one, PQ is parallel to AC and RS is parallel to AC, I can write PQ is parallel to RS. And PQ is half of AC, RS is equal to half of AC, PQ is equal to, now one side, one pair of opposite sides are parallel and equal, becomes a parallelogram. So PQRS becomes parallelogram. राइट, जैसे ही मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया, अब मेरे को जाना है भाई रोम्बस पे. एडजेसेंट साइड्स को अगर मैं इक्वल प्रूफ कर दूं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. राइट, सो अब मैं बी से डी को ज्वाइन कर देता हूं. राइट, सो सॉरी, बी से डी को ज्वाइन किया मैंने. ठीक है, ज्वाइन बी टू डी. अब मैं ट्राइंगल कौन सी देखूंगा? ट्राइंगल ए बी डी. ट्राइंगल ABD के अंदर आई कैन से PS is P and S are midpoints, are midpoint in the same way, and by midpoint theorem आपको फिर से वही लिखना पड़ेगा. by midpoint theorem आप सीधा कह सकते हो PS, right? PS is parallel to BD, and also I can say PS is equal to half of BD, right? Right, अब
यहां पे ध्यान से देखो, मेरे पास आ गया पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी डी, वन थिंग, एंड साथ में मेरे पास आ गया पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, राइट। अब ए सी इज इक्वल टू बी डी, diagonals are equal in rectangle. अब AC और BD इक्वल हैं, उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे, तो मैं सीधा कह सकता हूं PS इज इक्वल टू PQ। जैसे ही मैंने बोला एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, PQRS becomes rhombus. That's it. Such a straightforward question. Let's move on to the next. Answer the following question based on the linear equation. Here, draw the graph of the equation taking three solutions. Okay, three solutions लेने हैं। मेरे पास क्या है, 4x plus 3y is equal to 24, right? एक काम करते हैं, फर्स्ट टाइम थ्री सॉल्यूशंस लेने हैं, लेट्स मेक द टेबल। सो x को मैंने जीरो कर दिया, मैंने यहां पे जीरो किया, जैसे मैंने यहां पे जीरो किया y इज इक्वल टू 8/3, सो 24/3 दैट इज 8। नेक्स्ट टाइम पे मैंने y को जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया, तो ये 3y तो पूरा जीरो हो गया, सो 24/4 दैट इज 6। इसके बाद बिल्कुल सिंपल, मैं 24, x को मैं 3 रख देता हूं, बड़ा अच्छा नंबर निकलेगा, 4 3 से 12, सो 24 माइनस 12, सो मैं सीधा डिवाइड करूंगा 3 से, दैट विल बी, ये आपको करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, ऑल द थ्री ऑफ देम यू विल गेट दीज। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑन द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऑफ कोर्स मैंने वो दोनों कंसीडर कर लिए हैं। शेड द ट्राइंगल, वो भी कर लिया, ये देखो यहां पे y एक्सिस पे कट करता है, यहां पे x एक्सिस पे कट करता है, ऑफ कोर्स दिस गोज ऑन, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है आपके लिए, दिस गोज ऑन, सो मैंने दोनों मार्क कर दिए हैं। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा x एक्सिस पे कहां कट करता है 6,0, y एक्सिस पे कहां कट करता है 0,8, ये दोनों मेंशन करने जरूरी हैं, देन ओनली यू विल गेट द मार्क्स। शेड द ट्रायंगल फॉर्म with y line and the coordinate axis, formed by the line, by this line and the coordinate axis, ठीक है। so sorry, so यहां पे ये मेरे को कंसिडर करना पड़ेगा, राइट, मैंने शेड कर दिया रीजन। थर्ड पार्ट इज आल्सो डन, यूज द ग्राफ एंड फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दिस लाइन। ओके, लाइन कौन सी थी मेरे पास, लाइन आई ये रही लाइन, तो मैंने एरिया निकालना है इस रीजन का, एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, कोर्स इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे 90 डिग्री है, मेरे को बेस चाहिए, दिस इज बी, बी इज हाउ मच 6 एंड दिस इज h, हाइट इज हाउ मच 8, जस्ट पुट इट, so 6, this is 8, 2 4s are 6 4s are 24 square. That's it. Let's move on to the next one. Now we are moving on to section E. Case study based question, 3 case studies, and let's do it. Case study number 1. It's on history of Amul. Just read it carefully and let's move on. A survey manager at Amul Dairy has monthly expenditures of 100 families of housing society. This is given in the following frequency distribution. Monthly expenditures 0 to 150, 150 to 300, and the last one would be 900 to 1050. Number of families, here it lies. यहाँ पे x दिया हुआ है. That's it. Let's see. What is the difference between the upper limit of the fourth class? Upper limit of the fourth class. 1, 2, 3, 4. Upper limit of the fourth class. Okay. And lower limit of the second class. Lower limit of the second class. इन दोनों के बीच में difference चाहिए. That's it. So 600 minus 450 is how much? 600 minus, 150, sorry. 600 minus 150 is how much? 450. That's it. This is the answer. Next, find x.
x का है, मेरा x. I know the total number of families are 100. So let's add them up. इन सबको add करना है. So 100 plus 14 plus 15 plus x plus 28 plus 7 plus 5. Add everything up. That would be 79 plus x, which is equal to 100. So x की value 21. Oh, wonderful job. Next one. Put the value of x and makes the frequency distribution showing class marks. The column. ये रहा आपके सामने. x की वैल्यू मैंने डाल दी. Class marks, of course the middle one, of course the middle one, of course the middle one, and you can write the middle ones. इसीलिए मैंने पहले ही बना के रख दिया, so that I don't waste your time. You just have to check your right. Next one. Case study number 2. A farmer has a triangular plot of land at the center, which he uses to rear his cattle, sheep, and poultry as shown in the given. Right? यहाँ पे sheep, यहाँ पे cattle, यहाँ पे हमारी poultry and बीच में pond. Right? उसकी dimensions भी साथ में दी. Now, using the given information, answer the following question. Find the area of the field used for cattle rearing. इसका एरिया निकालना है AEF. Okay. AEF. AE. मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया बिकॉज मुझे तो पता था यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे. Of course, this has to be 90 degree because it is a Pythagorean triplet. You can check it. 25, 144, adding 169 means ये तो 13 बन रहा है. Area आपके पास है. You don't have to use Heron's formula, half base height, which will give you half into 5 into 12. So 2, 6 to 12. So आ गया 30. यहाँ पे क्या दिया हुआ meters. So 30 meters square. That's it. Part 2. Find the area of triangle ABC. Okay, triangle ABC. Okay, this comes out to be 21. This comes out to be 14. And this comes out to be 15. Right? इतना ही simple है. तो मेरे को क्या निकालना है? इसका एरिया मीन्स हेरॉन्स फॉर्मूला ऑफ कोर्स. सो मेरे पास ए दिया हुआ है 21, बी दिया हुआ 21, मैंने यहीं पर ही भी लिख दिया. बी दिया हुआ है आपके पास 14, सी दिया हुआ है आपके पास 15. यू हैव टू फाइंड एस फर्स्ट. एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2. सो दिस कम्स आउट टू बी 50 बाय 2. सो दिस इज 25. सो एरिया is going to be under root of S, S minus A, S minus B, and S minus C. So S is given to be 25. 25 minus 21 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपको लिखना पड़ेगा वो स्टेप. दैट इज 4. एंड 25 minus 14, that is going to be 11. 25 minus 15, that is going to be 10. If you find, मतलब इसके यार इसके पेयर्स बनाओ, पेयर्स बना के बाहर निकालो. आंसर वुड बी 10 under root of 110 square. Right? Next, part 3. Find the area of the field used to raise the sheep and poultry. Okay. अगर मैं sheep का एरिया देखूं, sheep का एरिया यहां पे 8, यहां पे 6, यहां पे 10, EBD. ठीक है. So EB, एक सेकेंड. सो B यहां पे होना चाहिए, सॉरी, B यहां पे होना चाहिए, D यहां पे होना चाहिए, E. दिस हैज टू बी B. ये भी सोची समझ के लिखा है. BD इज 10, E एक तरफ 6, EB is 8, ED is 6. क्यों लिखा ये? बिकॉज इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. 36 plus 64 is 10. हेरॉन्स लगाने की जरूरत ही नहीं है. सीधा आप एरिया निकाल सकते हो फॉर किसके लिए? शीप के लिए. हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ 6 into 8. So 2 4s are 8, 6 4s are 24 meters square. Now you have to find for the poultry. Poultry के लिए भी उतना ही simple है. Of course, again it is a right angled triangle. It has to be, right? As the dimension, this is 4, this is 3, this is 4. 4, 5 and 3. So यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेरे को 5 पे चाहिए DE, DF.
सो मैं यहाँ पे लिखूंगा D, यहाँ पे लिखूंगा F एंड यहाँ पे लिखूंगा C. So CD is 4 and CF is 3 and this is 5, absolutely correct. So this is 90 degree. अब area of poultry कितना आएगा? Half base to height. So this goes off. This is 6. दोनों के एरियाज मैंने, इसका एक और पार्ट भी था, फाइंड द एरिया ऑफ द पॉन्ड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग द पॉन्ड एट द रेट ऑफ ₹250 per meter square. एरिया ऑफ द पॉन्ड, इट इज एन आइसोसलिस ट्रायंगल. प्लीज ध्यान से देख के करते, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था. सो एफ ई एंड डी. ED was given as 6, this was given as 5, this was also given as 5. बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसे ही मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराया, इट वुड बाइसेक्ट दिस विकल्प 3. आपको H ही निकालना था, which is a Pythagorean triplet. आप निकाल सकते हो, this would come as 4. Otherwise you can check it. 5 square is equal to H square plus 3 square. This is going to be 25. And ये 3 means 9 इधर आ जाएगा. So means H square will become 16. H will become 4. So ये 4 आ गया. So आप एरिया इजिली निकाल सकते हो. हाफ बेस इज 6, हाइट इज 4, 2 3s 4 3s 12 मीटर स्क्वायर ऑफ कोर्स, राइट. जैसे ही आपका 12 मीटर स्क्वायर आया, आपको निकालना था रेट, कॉस्ट. तो कॉस्ट के लिए आप लिखोगे 12 into 250. So 25 250 means 300 means 3000 and rupees. That's it. This is your final answer, right? Last case study, कॉनकॉब की. ऑफ कोर्स आपको रेडियस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है. Let's jump into it and find the answer. The first one was find the slant height of the conical cob. Slant height, this is going to be L. तो ये तो मैं बिल्कुल सिंपल निकाल सकता हूं. Oh, so sorry. L square is equal to R square plus H square L square. So R square कितना है? 2.1 का स्क्वायर. And H कितना है? 20 का स्क्वायर. L square. So 21, 441. So 4.41 plus 400. This comes out to be 404.41, right? अब L निकालना है मुझे. So means you have to do long division for this. You can do it, guys. So answer would be 20.11. Meter square कहां से गया? Meters. Right? Next one. So the curved surface area of the conical concave would be, curved surface area is nothing but pi r. Pi is equal to 22 by 7 r. R is कितना दिया होगी यार? R is 2.1 and that is 20.11. This goes out to be 0.3 and finally it would become 132.726 and can be approximated as 132.73. Of course, it will be in meters square. Curved surface area is here. And the last part, the curved surface area of a right circular cone is this much. Okay, curved surface area मुझे दे दिया है 1232 meters square, centimeter square. Base radius, it is already given, centimeters. Find the height. Height मुझे निकालनी है. Means if I've got the curved surface area, so curved surface area क्या होता है? Pi RL होता है, right? So curved surface area is 12320, pi is 22 by 7 and radius is 56. So मेरे को L निकालना है. Of course you can find L. I'll directly give you the answer. That has to go to 70. अब यार मैं कोन की बात कर रहा हूं. कोन. तो मेरे पास ये 56 दे दिया है, मेरे को H निकालना है. आपको L मिल चुका है. That is 70. So of course L square is equal to H square plus 56, मतलब कि her square of course. So L square is 70 का square, H square plus of course 56 का square, 70 is 4900, right? Plus is equal to H square plus 70.
Oh, no, no, no. This would go to 56. 50 plus 6 means 3136, right? 3136. So h square would be somewhat 1764. So h किसका आ जाएगा 42 centimeters. That's it. इतना ही सिंपल था. इसका एक और पार्ट भी था. So if each 1 centimeter square of a corn cob carries an average of 4 grains, how many grains would you find in the entire cob? 1 centimeter square के area के अंदर you get 4 corn cobs, right? मेरे पास area कितना है? 132.73, right? Centimeter square. तो कितना होगा? 4 into 132.73, that is approximately equal to 531 corn in total, corns, right? So this concludes your discussion of St. Kabir Public Schools Sector 26 Final Examination Session 22-23 Class 9 for Mathematics paper. Have a great day.